citation, I add a new source. Okay, this loads up, and then I have to enter all this information manually. But I don't have to do that, actually. What I have here is mendely library, which is, here's an example. To get this, you have to sign up to Mendeley, and there are other videos to get you to populate this with your references. So I'm just going to show you just the export of this reference into Word. So you just highlight the references that you want to. Let's say I just want these 5 references, and I go to export for MS Word, and you see that it's created a file called XML export 5, right? So I go back to Word, and I go to references and manage resources. By the way, this feature is only available for Word 2010 and up for Windows. It's not available for Mac, unfortunately. I don't know why Windows have chosen to do that. Microsoft Word has chosen to do that, but that's the only thing that's available is in Windows Word. So let's go to downloads where the source was. So you can see it was XML export 5. I've been testing this quite a number of times, and there it is. Here's my 5 references. So let me just shoot them all across. Copy, and there it is. So, okay, you notice that only 4 shot across, and that's because there's still some limitations to references. So what I have here is Star Collaboration journal, and our limitation here is that if you have a journal with a ton of authors, it has an issue going over. So it's not perfect. We'll figure out that bug. But in the meantime, for most journal articles that have just a few authors, we can bring that across. So there it is. I have to copy that over. So inside the Word document, and it carries with it good stuff. And I will insert this citation. So I'll insert 1 citation. There it is, and there's my citation. To add another citation, you have to click to it to the left and insert another one. I'll insert Dunlop, and there it is. So it's now embedded inside. Great. So there it is. If I want to change it to a different style, let's go to IEEE. There it is. If I want to change it to another style, yeah, there it is. So how do I add the bibliography? Then after I do that, I will insert my bibliography and do it as works-cited or bibliography. And there it is. So you can actually change this to whatever you like. And then you can actually fix this as well. You could actually tune this. If I don't want the period here, you could fine-tune that as well. So you notice that it actually puts in all the citations in the bibliography, not necessarily the ones I've cited. So make sure that when you insert the citation, you only include the ones that you're going to cite. And you can choose that via this. Okay? So, I will show you in another video of how to in this episode we'll be looking at how to use mendely and mendely line. And so today that so the first thing you've got to do क्या चीज लग रही है सुनो सर जो वर्ड से उसको लिंक करना है वेब के साथ लिंक करना है इसको तो सर आप वो मुझसे पूछ लेते पहले ही भाई एग्जाम से यही तो आपसे पूछ रहा हूँ इसको वेब से कैसे ये चीजें सर मैंने आपको बताया तो है कि वो प्लग इन कैसे करते हैं जब मैं प्लग इन रिमूव कर दूंगी तो वो खत्म हो जाएगा मैंने आपको करके भी दिखाया सर इसलिए मैंने जिले को भी साथ बुला लिया कि अगर मैं कुछ नहीं समझा सकती तो वो आपको बता ओके
इंस्टॉल, तो मैं पहले एमएस पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसे भी खोल दें। भी हो जाता है आप खुद कह रही थी बंद करना पड़ता। सर। कर लें, बेशक से दोबारा खोल लेंगे उसे। चलो ये मैं सीख गया तो ठीक है। और जो बच्चे जिन्होंने मेंटली किया तो वो मेंटली के साथ हो जाएंगे। जी सर। सर अब वर्ड जाके ओपन करेंगे तो वहां से ऐड हो जाएगा। इधर सर वर्ड ओपन करें ना, वहां से होगा फिर। सर यहाँ एक्सटेंशन भी ऐड करनी पड़ती है मेंडले की, इधर गूगल क्रोम पे। सर अगर आपने डायरेक्ट कोई लिंक वहां पे भेजना है उसके अंदर, मेंडले के अंदर, तो उसके लिए करना पड़ता है। सर इधर ये रेफरेंसेस में जाए ना, पेज लेआउट के साथ रेफरेंसेस में जाए। ये टॉप पे देखें सर, इधर ये इंसर्ट साइटेशन अब करें। इधर जी सर। इंडेक्स फिर ये इंसर्ट साइटेशन करें, फिर वो कहता है कि अपना जो आपका है पीडीएफ फॉर्म में उसको सर्च करें, जो जो हमने मेंडले में सेव किए होंगे। ये इस तो पे वो नहीं होगा क्योंकि ये कोई साइटेशन यहाँ पे गलत डली हुई है, तो इसको मैंने अलग से अपना कॉपी पेस्ट करके उसको रेफरेंस ऐड किए थे। फिर हमने भी इंट्रोडक्शन की अलग से फाइल बनाई है, इसके अंदर नहीं होता। सर आप वैसे कोई फाइल ओपन करके देख लें, फिर समझ आ जाएगी आपको। सर अब इधर जो भी हमारा रिलेटेड होगा ना, जिसके आगे हमने ऐड करना है, वो जिस जिस पीडीएफ से हमने उठाया होगा ना, उस पीडीएफ का उधर लिंक पेस्ट करेंगे या पीडीएफ उठा के पेस्ट करेंगे सर। वो फिर जो लाइन जिसके आगे हमने ऐड करना है उसके आगे वही वाला रेफरेंस ऐड हो जाएगा जो उधर दिया हुआ है, नेट पे जो दिया होगा। सर वो ऑटोमेटिकली उसी लाइन के आगे वही ऐड होता है जो पहले होता है वहां पे। तो मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कर लें, 1 मिनट रह गया बस।